driven by narrow domestic political objectives. Excellencies, ladies and gentlemen, India failed on all accounts. Acting under Article 51 of the UN Charter in self-defense, Pakistan, under the leadership of the then the Army Chief, Syed Asim Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defence Forces, gave a determined and decisive response which was measured, collaborated and proportionate directly solely to military installations. Pakistan's resounding success in drowning off several Indian fighters, jets and drones under the leadership of the Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu and the neutralization of multiple military targets is an indisputable reality. These facts are widely documented and acknowledged and stand as a matter of record beyond the reach of misinformation or propaganda. Pakistan Navy was also alert and ready for any challenge under the leadership of Admiral Naveed Ashraf. Excellencies, ladies and gentlemen, through its resolute response, Pakistan reaffirmed that the only acceptable normal in international relations in respect for the principles enshrined in the UN Charter, including sovereignty, territorial integrity, and political independence. It was also established that the regional peace and stability will not be held hostage to the politics of hatred and division, and that Pakistan will defend every inch of its territory while safeguarding its citizens. We commend the role and efforts of President Trump in helping achieve a ceasefire and in bringing South Asia back from the brink of an unprecedented disaster. We also remain appreciative to the constructive role played by the Kingdom of Saudi Arabia, Turkey, as well as our other friendly countries in the region and beyond. Excellencies, the events of last year once again underscore that the unresolved Jammu and Kashmir dispute continues to undermine peace and security in the entire South Asia. We must ensure renewed and concerted efforts under United Nations auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of this dispute in accordance with the relevant Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The treaty provides no basis for such unilateral actions. India's move undermines a fundamental pillar of regional stability and has serious implications for the peaceful management of shared resources. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. The UN Security Council convened close consultation under the agenda item the India-Pakistan question on 6th of May 2025 at Pakistan's request. Pakistan's position was reflected in the Council's deliberations as members expressed deep concern over the growing risk of escalation and emphasized the urgent need for restraint and de-escalation, including concerns regarding attempts to undermine the Indus Water Treaty. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's position also received an authoritative international validation in December 2025 when UN Special Rapporteurs and independent experts confirmed in a formally released report that India's use of force inside Pakistan
following the 22nd of April Pahalgam incident, violated international law and risked escalating a volatile region which could have a very serious conflict between the two nuclear-armed states. Beyond India's unilateral decision to hold the Indus Water Treaty in abeyance and its attempt to politicize shared water resources, Pakistan has observed a concerning pattern of irregular and unexplained fluctuations in river flows over the recent period, raising serious questions regarding compliance with established treaty obligations. Earlier in April 2025, we have twice observed unusual abrupt variations in the flow of the river Janab, first between 30th of April and 21st of May 2025, and then again between 7th and 15th of December last year. More recently, on 2nd of May 2026, the flow of the river Jhelum was observed to rise sharply within a short span of time before dropping again significantly within the same time. Similarly, during 2nd and 3rd of May 2026, unusual and unexplained variations were recorded in the river Chenab, including a marked decrease in flow during the early hours of 3rd of May 2026, well below expected seasonal levels. Excellencies, ladies and gentlemen, these developments taken together reflect a worrying pattern of irregularity and underscore the urgent need for full transparency, uninterrupted data sharing, and strict adherence to all notification and operational obligations under the Indus Water Treaty. We hope that India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka-e-Haq. First, any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve, and determination. Second, the legitimate struggle of the Kashmiri people for self-determination cannot be suppressed by the Indian occupation. Instead of externalizing blame for its ongoing suppression of Kashmiri people, India must take immediate and meaningful steps towards a just settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with relevant UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. Third, durable peace in the South Asia can only be built on equality, mutual respect, and peaceful resolution of disputes. India's persistent reliance on unilateralism and jingoism are a threat to regional peace and stability. Excellencies, Pakistan remains a firm believer in the enduring relevance of multilateralism and the peaceful resolutions of all disputes. We support universal and consistent adherence to the principles of UN Charter, including self-determination, the non-use or threat of force, and the peaceful settlement of disputes. These principles are not only abstract ideals, these are essential foundations for sustaining global peace and stability. Pakistan's current membership of the UN Security Council provided us an important opportunity to advance principled, balanced, and constructive engagement on issues of international peace and security. As an elected member, Pakistan has focused on bridging divides, promoting dialogue, and strengthening the role of elected members through more transparent and inclusive working methods. During its presidency of the UN Security Council in July 2025, Pakistan convened a high-level ministerial debate on promoting international peace and security through multilateralism and the peaceful settlement of disputes. The unanimous adoption of Resolution 2788, after many years there was a unanimous resolution in the Security Council during our presidency, further underscored this commitment, marking a concrete outcome of its efforts to strengthen multilateral approach to conflict prevention and resolution.
Pakistan has consistently emphasized that unresolved and protected disputes, particularly those involving foreign occupation or the denial of self-determination, remain among the gravest threats to the international peace. Excellencies, ladies and gentlemen, durable peace cannot be achieved through force or coercion. Justice, respect for fundamental rights, particularly the right of self-determination, the peaceful settlement of disputes, and the faithful implementation of the UN resolutions remain indispensable to sustainable global stability. Guided by these principles, Pakistan has actively worked to strengthen cooperation across multilateral platforms available on the globe. During our presidency of the Council, Pakistan convened a briefing on enhanced cooperation between United Nations and Organization of Islamic Cooperation (OIC), underscoring the importance of closer coordination among multilateral institutions in addressing shared challenges and advancing common objectives. At the regional level, Pakistan's engagement is anchored in the wide network of multilateral forums, including the OIC, the Economic Cooperation Organization (ECO), and the D8, which serve as important frameworks for promoting dialogue, cooperation, and shared development. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan looks forward to assuming the upcoming ECO chairmanship of the Council of Foreign Ministers and the ECO Summit in 26-27. This will provide an important opportunity to further advance regional economic integration and connectivity. Pakistan also continues to play an active and constructive role within Shanghai Cooperation Organization (SCO). Pakistan will assume the chair later this year and will host the summit of the heads of state next year in 2027. Pakistan aims to deepen regional cooperation across Eurasia, particularly in trade, connectivity, security, and sustainable development. Building on these engagements, Pakistan is deepening its partnership with Central Asian states across diverse sectors, particularly in connectivity, trade, energy, cooperation, and infrastructure development. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's continued collaboration with its all-weather strategic partner China, including through the China-Pakistan Economic Corridor, generally known as CPEC, remains a key pillar of its regional connectivity agenda, contributing to shared prosperity, development, and economic integration. In parallel, Pakistan maintains a broad and constructive partnership with the European Union, encompassing political dialogue, trade, development, cooperation, and climate-related priorities, reflecting a shared commitment to stability, sustainability, and inclusive and shared growth. In Africa, Pakistan's engagement is rooted in historic ties of solidarity and shared struggles for self-determination and respect for sovereignty. Pakistan continues to advance for African perspectives to remain central in the Security Council's deliberations while supporting African-led peace and security initiatives, particularly those of the African Union and sub-regional organizations. Pakistan's peacekeepers serving under the United Nations have made and continue to make important contributions to peace and stability across the continent. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan remains supportive of initiatives aimed at strengthening multilateral cooperation, including the Global Governance Initiative, which seeks to make the global governance system more responsive to the needs and aspirations of the developing countries while addressing shared global challenges. In the Middle East, Pakistan, together with other 8 Arab and Islamic countries, remains committed to advancing the comprehensive plan to end the Gaza conflict,
in line with Security Council Resolution 2803. In pursuance of this objective, Pakistan joined the Board of Peace in January 2026 when Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif formally signed the Board of Peace document, which seeks to facilitate implementation of the Gaza Peace Plan and support the reconstruction of Gaza in the near future. Pakistan firmly believes that sustainable peace in the Middle East requires an end to occupation and the full and faithful implementation of agreed peace initiatives leading to the establishment of a sovereign, independent, viable and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital, an outcome that remains essential for lasting peace and stability in the region. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's constructive engagement in recent and ongoing efforts for promoting dialogue and de-escalation in the Gulf region reflects its consistent commitment to peace and stability. Drawing on its relationship across the region, Pakistan has made efforts to reduce tensions and create space for meaningful engagement among key stakeholders. I can share with you that right from the first day, 28th of February, I was actually traveling when Iran was attacked. Pakistan was the first one to come out and Foreign Office condemned that attack. Within hours, same day, the attacks started on the Gulf countries. We continued to make efforts and we had no choice but to also condemn those attacks on our friendly and brotherly countries, GCC. Since that day, we have been continuously making efforts with all the stakeholders and particularly US and Iran to sit and negotiate between them and reach to a truce and end this conflict. As you are all aware, that eventually, after a gap of 47 years, during which the two parties never agreed to sit together and have direct dialogues, Pakistan managed, and Pakistan was able, as a result of its untiring efforts led by Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and supplemented by Field Marshal Syed Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan, we managed to get them to hold direct talks after 47 years in this very beautiful city of Islamabad. It was a marathon session of 21 hours, which started in the afternoon of 10th and ended early hours of 11th of April. I'm happy to say that things proceeded and progressed very, very positively, but the parties needed to go back to their capitals and the leadership for the consultation. So they left on 11th. We as facilitator and mediator tried to do a duty for the region and beyond. I think they made very good progress by 11th morning, but as I said, they had to leave and consult. What did we achieve? At least even before the negotiations started, we managed to convince for a ceasefire. So the ceasefire later on was extended, and a third extension, second extension, and a third extension. What is our objective and aim is to continue to convince both sides as an honest facilitator and mediator to negotiate and reach a peaceful settlement. This is need for the region. This is need for the globe. This is need, for the economy of the world. Whatever has happened so far, it has already dented our global GDP to a great degree.
It's not me, it's the international financial institutions who are saying this thing. So, you know the way the prices of energy have shot up. The affordability of the common man has become fairly difficult. The supply chain has been disrupted. So, the end of this conflict is the goal and the aim. As facilitator, and I want to acknowledge all those countries, all the multilateral institutions who actually reached out to Pakistan and were kind enough to support this initiative, has expressed their willingness to assist wherever it is required. Since 28th of February, I, as Foreign Minister of Pakistan, have the pleasure of speaking to or receiving calls from 121 colleagues, my colleague foreign ministers. Between India and Pakistan was, you'll be amazed, my calls was around 60. It's already crossed the double of you can see the seriousness of Pakistan in making all the sincere efforts to get the two parties to reach to a truce and end this conflict, which is hitting almost everybody directly or indirectly in the region and beyond. So, Excellency, I just wanted to, avail this opportunity. Most of those calls are, to my colleagues sitting here in the Foreign Office, to their foreign ministers or deputy prime ministers, my colleagues. And as I said, UN Secretary General, European Union Vice President, you name a country and it would be in our list. So the entire consultative process is aimed at getting this conflict over as soon as it can be done. So obviously it takes two to tango. We are doing our best and we are very hopeful that, God willing, Pakistan will succeed with the efforts, with the wishes, with the messages of all of your capitals. During this entire process, I had an opportunity. I was invited by my great friend, Foreign Minister Wang Yi, to Beijing for a day to consult on the matter. And I'm sure most of you would have seen during the one-day deliberations on this issue, conflict in the Middle East, US-Iran conflict, we managed to come up with 5 points peace initiative for the region, which actually was supported by dozens of countries over the phone, through the messages. Objective: just work for the global peace and bring back, the lost prosperity, the economic viability, within the reached prices of the energy, which has become almost doubled in this whole process. So Pakistan is, I would say, is discharging its duty as a member of the global community to do our best, and we greatly acknowledge, all our friendly countries who have been supporting and encouraging us to continue this effort, whether it is Central Asian states, whether it's South Asia, the West Asia, the Middle East, you name it, the Europe, Americans, everywhere. So from Australia to Canada to everywhere, we have been in touch on regular basis. So objective is common, as that this this conflict ends in a dignified manner. It should be win-win, obviously, because of the sensitivity of the matter and the responsibility as a facilitator, mediator. I regret that I cannot divulge the detail, because a facilitator and mediator is expected to be very discreet. Pakistan sincerely doing this business, and attempts for the purpose of the regional and the global security, which must be worked for by everyone who believes in these principles, which Pakistan surely does. So we are pleased to.
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सोफरा और डिप्लोमेटिक कवर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में मार्का हक की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। क़याम पाकिस्तान से 2025 तक पाकिस्तान के सफर की कहानी अब किताब की सूरत में। तकरीब रूनुमाई 5 मई 2026। मार्काए हक, हर सफा एक सच, हर बाब एक गवाही। वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पाक भारत जंगों की तफसील, मजमूम भारतीय अज़ाइम और झूठ का हथियार हर दौर में जारी रहा लगातार। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बुज़दिलाना जा रही है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब का अहवाल ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के साथ जिन्हें दुनिया ने तस्लीम किया। हम हैं बुनियानुम मरसूस, पता हमारी पहचान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाकिस्तान के किरदार का ऐलान है। हकीकी वाक़यात पर मबनी किताब मार्काए हक करीबी बुक स्टोर से तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें। क़याम पाकिस्तान से 2025 तक पाकिस्तान के सफर की कहानी अब किताब की सूरत में। तकरीब रूनुमाई 5 मई 2026। मार्काए हक, हर सफा एक सच, हर बाब एक गवाही। वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पाक भारत जंगों की तफसील, मजमूम भारतीय अज़ाइम और झूठ का हथियार हर दौर में जारी रहा लगातार। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बुज़दिलाना जा रही है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब का अहवाल ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के साथ जिन्हें दुनिया ने तस्लीम किया। हम हैं बुनियानुम मरसूस, पता हमारी पहचान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाकिस्तान के किरदार का ऐलान है। हकीकी वाक़यात पर मबनी किताब मार्काए हक करीबी बुक स्टोर से तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। वाह, पहाड़ों में चपली कबाब। आलिया, पहाड़ दिल की सुनते, बोल के तो देखो। अरे किल्लू, मसूड़ों में दर्द है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। कोलगेट हर्बल मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। आम एसी कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इको स्टार एरियो मैक्स। बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step power limit and 5th generation indoor and outdoor self cleaning. EcoStar, extra fast, extra cool, extraordinary. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। This headline news is brought to you by हुकूमत अफवाज पाकिस्तान और अवाम चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानिंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, अहम संग-मील करार दिया और फोरम से खिताब में कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई आज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़ल्ज़ल अहद की अक्कासी करता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत के अज़्म का इआदा। फोरम ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दहशत गर्दों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कहा कि अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। शुरका ने शहीद जवानों और मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ जाहियत की गई। भारत के तैयारे और ड्रोन तबाह किए। उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सीख गया होगा।
पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कवर से खिताब। कहा पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपना दिफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में बेहतरीन किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर जनूबी एशिया में कशीदगी की बड़ी वजह है। सिंतास माहदे से मुताल्लिक भारतीय इक़दामात पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये जंग तस्वुर होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ पंच। देखते रहिए बोल। वो निहारी को वाइप कर देगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। अमरीकी सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हुई है। ईरान और अमरीका ने एक दूसरे के जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज के एक मुबैना हमले में 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। उधर ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीका और इत्तेहादियों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमरीका ने जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील को ख़तरे में डाला है। उन्होंने अमरीका को खबरदार भी किया है कि ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू नहीं की है, तो खबरदार रहें, मोहतात रहें। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद UAE ने जवाब देने का इंदिया दिया है और उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक दावा है कि मुमकिना तौर पर आइंदा चंद दिनों में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी कर सकता है, जबकि इस कशीदगी के बीच मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगे पसंद नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। एहतशाम उल-हक प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा मुझे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। चिश्ती साहब, आपकी इजाज़त से एहतशाम साहब, बुनियादी तौर पे इस वक्त दोनों ही फरीक जंग नहीं चाहते, दोनों ही फरीक अमन चाहते हैं, लेकिन दोनों ही फरीक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई पर भी उतरे हुए हैं। एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या कि अचानक वो जो जंग बंदी की सूरत हाल थी वो तहबाला हो गई? खबर क्या है अंदर की? देखिए, वह 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो लेटेस्ट ट्वीट है, जहाँ पे वो बहुत सख्त बातें कर रहे हैं, हमले की बातें कर रहे हैं और लफ्ज़ भी कह रहे हैं कि ईरान पहले से ज़्यादा लचक दिखा रहा है। अभी देखिए, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले से ज़्यादा लचक दिखाने का मतलब ये है कि बहुत से हवालों से उनकी तवक्कुआत पूरी होती नज़र आ रही। अभी देखें, जो काउंटर प्रपोज़ल आई हैं अमरीका की तरफ से, वो ईरान को दे दी गई हैं, पाकिस्तान के ज़रिए उनके पास पहुँच गई हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं आपको जो बता सकता हूँ, जो मेरे ज़राए और सफारती ज़राए, हुकूमती ज़राए, जो मुझे पता चला है लेटेस्ट के मामला किधर जा रहे हैं। कल रात की जो हमारे सागदार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो गुफ्तगू हुई है, उससे जो खबरें निकल के आई हैं, एक तो यह कि इराक़ी साहब ने एक जो मैसेजिंग की है कि जी बातचीत जो का जम्शन ऑफ टॉक्स होना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इसके लिए वो पाकिस्तान के एफर्ट को ना सिर्फ सराहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जी आप सारी बातें अपनी जगह, आप इसको आगे लेके जाएं। और यही मैसेजिंग जो है ना अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान को मिली है। और दोनों पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना वो अपनी अपनी जिसको कहते हैं बातें, डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा भर के लेके आ रहे हैं, ताकि वही जो लोग कहते हैं कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें अपनी मर्ज़ी की जनाब, जिसको कहते हैं कंसेशन, ताकि दोनों अपने मुल्क को जाकर बता सकें कि हम जंग जीत गए। अभी 3 चीज़ें जो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि अमेरिका में लेटेस्ट जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी, एक तो आप देख लें, जंग वो कहते हैं बहुत ही अनपॉपुलर साबित हुई है, बड़ी कॉस्टली साबित हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जी कोई एंड गेम के बगैर ये जंग शुरू की गई है। अच्छा, अब इस हवाले से जो अहम चीज़ पता चली है, मुझे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ने अपने 3 माइलस्टोन तय किए हैं कि वो जो इस महीने के अंदर अंदर वो कहते हैं बहुत ही ज़रूरी है उनको अचीव करना। एक तो वो ये बता रहे हैं कि जी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, इसको जीतने के लिए हमें ज़रूरी है कि जंग बंद हो
और हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वहाँ पे जाएं। दूसरा वो कह रहे हैं कि 4 जुलाई को अवैध 250 साल अमेरिका के हो जाएंगे आज़ादी के, वो उसको देखना चाहते हैं कि वहाँ उस दौरान क्या मैसेज आएगा। तीसरा जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो चीन का दौरा है, उस हवाले से वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरी इत्तला है वो जो चाइना ने उनको बताया है वो बड़ा वाज़े तौर पे है कि जी आप डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एनी पोटेंशियल ट्रेड डील इफ़ यू आर कमिंग विदाउट रिजॉल्विंग दिस ईरान क्राइसिस। ये एक बड़े वाज़े तौर पे उनको एक मैसेजिंग की गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जितने बुरे तरीके से चाइना के हर्ट हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जब आप आएंगे, आने के बाद आप अगर ये अनरिजॉल्व लेके आते हैं इशू, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी कि आप के साथ किसी डील पे जाएं ना करें। ठीक है, और ये डील बड़ी डुआ डाई वाली उनके लिए। जी एक दो चीज़ें और वाज़े कर दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और जो एलिमेंट है ना जो जिस पे अमेरिका में बहुत प्रेशर आ गया है, देखिए ऑयल और गैस जिस तरीके से नहीं मिल रही, आप देख लें हिंदुस्तान में लाइनें लगी हैं, वहाँ पे जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे लिखना शुरू कर दिया कि जी तेल नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है एक नई डायमेंशन दाखिल हुई है कि 1/3 ऑफ फर्टिलाइज़र वो रुक गया वहाँ पे जाने का। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ साथ वो जो फूड के बड़े अदारे हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी बड़ा एक ग्लोबल वो जो फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगा अगर ये परसिस्ट करता है, ये नई चीज़ें जाती। और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 2000 जहाज़ आबनाए हॉर्मस में रुके हुए हैं, 22,000 वहाँ सेलर उनके फंसे हुए हैं, इसको निकालने के लिए कुछ किया जाए। वो खैर, तो एक तो ये सूरत हाल बननी है कि एक मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से, और दूसरा ये कहा जा रहा है, जो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जिस पे बहुत ज़्यादा अवैध वो झगड़ा है ना कि 440 ग्राम का एनरिच यूरेनियम जो कहा जाता है गैस सेंटर में पड़ा हुआ है अस्फहान में, उसका क्या किया जाएगा। देखें, ये कई हवालों से रशिया ने कहा हमें दे दें, चाइनीज़ अपना ईरान ने भी कुछ तवक्कुआत का इज़हार किया। अब लेटेस्ट जो पता चल रहा है वो ये कि जी दोनों ईरान भी और अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है कि ये पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली इतना बड़ा स्टेचर बना है, वो कहा जा रहा है कि इतना रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक एक्टर पाकिस्तान सामने आया, उसके मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं चाहूँगा कि इसको तफसील से रेलेवेंट हो गया। हाँ, इसको हम तफसील से ज़रा डिस्कस भी करते हैं। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वहीं साथ ही साथ चिश्ती साहब, इसमें बुनियादी तौर पर एक जंग बंदी थी। दोनों फरीक कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे, डील किसी को पसंद आ रही थी नहीं आ रही थी, लेकिन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन थी, जो कि बताया जा रहा है अब भी है। लेकिन कल रात को जो अचानक हुआ वो ब्लॉकेड के आगे ब्लॉकेड लगने पर एक एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, या ये एक ओनली वे आउट था ईरान के पास कि वो यही कर सकता था और उसने अपनी जो पोस्चरिंग है वो चेंज की, जो कि बदल रही थी बड़ी तेज़ी से ब्लॉकेड की वजह से। जी बहुत शुक्रिया सदीकी साहब, शाम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो जंग लड़ी गई 40 दिन तक, वो इटसेल्फ तारीख का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ तक तमाम साइड्स ने, ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान ने, अमेरिका फोर्स बैक बाय इजराइल ने पूरा जोर लगाया कि जो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे, जो उनके जहन में थे, वो हासिल कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके और अपने लोगों को वो नहीं दिखा सके जो उनको चाहिए था अपने दिखा, ऑब्वियसली जो पर्पस था। ईरान ने भी, दोनों की अपनी अपनी लीवरेजेस मिली हैं। अमेरिका की लीवरेज पहले से भी यही थी कि सुपर पावर है, सबसे बड़ी नेवी है, आज भी है, लेकिन वो मिथ टूट गई जो हम समझते थे आज से कोई 2 महीने पहले, जो हम समझते थे कि अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत है। ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल की है। जैसे मैं कहता हूँ कि उसने इजराइल पर बहुत इफेक्टिव हमले किए, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली ब्लॉक किया, उसने जंग को रीजनलाइज कर दिया। तो ये सारी एडवांटेजेस ईरान के पास भी हैं। तो अब हो ये रहा है कि उस टेक होम जो उनको मिला है उस जंग का, अनफॉर्चुनेट जंग तो थी, लेकिन जो उनको एडवांटेजेस लीवरेज मिले हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि चाहे मैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए बिकॉज मैं सुपर पावर हूँ, मुझे वेस्ट सेविंग चाहिए। वो कहेंगे नहीं, लेकिन जाहिर है वो चाहेंगे। ईरान ये चाहेगा कि हमें भी न्यू फाउंड लीवरेज मिला है, जो हमें नहीं पता था कि 47 सालों में हम कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक के नहीं कर सकते और कितना इफेक्टिव कर सकते हैं, तो हमें भी लीवरेज चाहिए। आई थिंक अब मोर ऑफ पोस्चरिंग हो रही है टुवर्ड द कंक्लूजन कि अपने अपने लोगों को ये बता सकें कि हमने दूसरे फरीक पर कितनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की है, कितना ज़्यादा हमने नुकसान पहुंचाया है और किस हद तक डिस्ट्रक्शन किया कि हमें वो मिला है जो हम हासिल करना चाहते थे। और जो हासिल का लफ्ज़ है वो भी मैं इसलिए सोच के कह रहा हूँ कि हासिल तो अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से होना है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैंने रजीम भी चेंज कर दिया, तो कल को वो विक्ट्री भी अनाउंस कर सकते हैं यूनिलैटरली। तो आई थिंक मोर इंसिडेंट वन स्टैंड और इंसिडेंट को ओवरऑल जंग पे कोई इफेक्ट खास नहीं मैं देख रहा। दूसरा, बाज़ दफ़ा आप देखिए हर जंग का एक कूलिंग पीरियड भी होता है। ये नहीं होता कि इधर बुलेट फायरिंग ख़त्म हुई और अगले दिन से मुज़ाकरात हुए, जैसे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तीसरे दिन मुज़ाकरात शुरू हो गए थे
वो कूलिंग पीरियड से पहले हुए थे। मेरा मानना ये है कि हॉस्टिलिटीज जब एंड होती हैं फॉर्मली, चाहे सीज फायर हो, उसकी वैल्यूएशन होती है, स्टडी होती है, फिजिबिलिटी निकलती है, नुकसानात और फायदों का हिसाब लगाया जाता है, तब मुज़ाकरात होते हैं। आई थिंक हम दोनों ने रियलाइज कर लिया और दोनों समझते हैं कि अपनी अपनी एडवांटेज है जिसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल कर रहा हूँ, फिर एहतशाम साहब यकीनी तौर पर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। ये जो कूलिंग पीरियड की आप बात करें, ये एग्जैक्टली हम इसे किस तनाजुर में देखें? यानी अगर हुर्मुज़ खुल जाती है और सारा ऑपरेशन यहाँ से बहाल हो जाता है तो ये इज इट सफिशेंट, ये एग्जैक्ट कूलिंग पीरियड है जो रिक्वायर्ड है इस सारी सूरत हाल में टेबल पर बैठने के लिए? नहीं, मैं कूलिंग पीरियड वो बात कर रहा था कि जब जंग खत्म होती है तो आप मुज़ाकरात पे आते हैं, तो जब आप मुज़ाकरात पे आते हैं तो अपना हिसाब किताब लेके आते हैं। मैं उसको कह रहा था, नफा नुकसान गिन के आते हैं, नफा नुकसान गिन के आते हैं, अपना स्टेमिना वॉर का गिन के आते हैं, कितना डिप्लीशन हुआ, आपका म्यूनिशन कितना रह गया है, कितनी इफेक्टिवनेस है और कितनी डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, कुशनिंग आपकी कितनी है डिस्ट्रक्शन लेने की, लोगों की मोरल मोटिवेशन कितनी है, दुश्मन की और आपकी विल टू फाइट कहाँ पहुंची है। तो ये इंटेंजिबल और टेंजिबल फैक्टर्स का मजमुआ होता है। ये आपने जंग के बाद हिसाब लगाना होता है, फिर आप मेज पे आते हैं, फिर आप अपने नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद आपको पता होता है ना आपकी पोजीशन क्या है। एहतशाम साहब आपसे अब सवाल करना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब, ये खालिद साहब जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये जो पहली दफ़ा जिस तरीके से इजराइल के नुकसानात CNN की एक रिपोर्ट में आए हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि आजकल नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा होता है CNN के ऊपर ही है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि कहाँ कहाँ जो है ना उनके नुकसानात हुए। दो चीज़ें हैं, एक मेरी किसी साहब इत्तला है कि जिन चीज़ों पे काम हो रहा है वो आपने देखें, जो अबनाए हुर्मस है ये एक इरिटेंट है बहुत बड़ा। और आपने देखा जब पिछली दफ़ा अपने ईरान ने इसको छोड़ दिया था और इससे अपना हटा दिया था वो कब्जा, तो उसके बाद अमरीकियों ने बीच में आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि जी अगर कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होना है तो जिस पे काम हो रहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों ऐलान करेंगे कि फ़लाँ तारीख को अपना इसका क्या कहते हैं ये जो अपना इसको खोला जाएगा। और दूसरा चीज़ साहब फिर वही उनकी सुई अटकी हुई है और ये कह रहे हैं कि जी हमें इन राइटिंग अमरीकी जो है ना वो लिख के देंगे, दोबारा हमला नहीं होगा। और कुछ इत्तलात मुझे लग रहा है कि ऐसी मिल रही हैं जिससे वो भी तैयार हैं कि ये एनरिचम यूरेनियम का मामला हल हो जाए और ये मोरेटोनियम 15 साल का जो मिल जाए उनको। इसके बाद वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प लग रहा है कि जितना शदीद दबाव उनके पब्लिक क्या है वो उधर जाएंगे। और आखिरी बात इसी साहब जिससे भी कमेंट कीजिएगा, ये ईरान वालों को, इस रजीम को अब उन्हें कहा जा रहा है कि एक लेजिटिमेसी चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे, और वो उनको तभी मिलेगी कि यहाँ को अच्छी बेहतर डील लेके वहाँ से जाएँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो डील करने की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातें चल रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को समथिंग मेजरेबल चाहिए जो वो दिखा सके अपनी पार्लियामेंट, कांग्रेस को और बाकी दुनिया को, और ख़ास तौर पर जो राय उनके खिलाफ हुई है जंग में मोर देन 60%, उनको दिखा सकें कि देख मैं जस्टिफाइड था एक जंग शुरू करने में। एक वॉर ट्रॉफी, जिसको मैं अक्सर लफ्ज़ यूज़ करता हूँ सादा लफ्ज़ों में, कि वो ट्रॉफी दिखाना चाहते हैं कि जीत कर आए हैं। ईरान नहीं चाहता कि वो वॉर ट्रॉफी उनको दे, बल्कि वो चाहता है कि मैं अपने लोगों को दिखाऊं। क्योंकि दिसंबर में जिस तरह आपने देखा था कि अनरेस्ट पैदा हुई थी ईरान के अंदर, मुजाहरे शुरू हुए थे, कुछ लोग जानों से गए थे, उस वक्त भी एक इख्तलाफात थे विद इन द सोसाइटी, चाहे वो हार्डशिप थी और बहुत सारा वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। ईरान भी ये चाहता है कि ना सिर्फ वो सेगमेंट जो मुखालिफ था उनको चुप कराया जा सके, बल्कि जिस सेगमेंट ने ऑल आउट सपोर्ट किया इस जंग को, जो इस हुकूमत के साथ खड़ा रहा है, उनको भी उन्होंने दिखाना है। तो दोनों विन विन चाहते हैं। ठीक है। अब जो आखिर में आप इशारा कर रहे थे कि डील किस तरफ जा सकती है, ऑप्टिकली किस तरफ जा सकता है, 15 साल की हो सकती है कि नहीं, मेरा ख्याल है आखिरी जो आपका पोर्शन था, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ईरान का जो सबसे लेजिटिमेट इसमें डिमांड है वो यही है कि मुझे डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए कि ये सदर अगले साल, अगले से अगले साल एक और सदर अपनी मर्जी, अपनी जज और अपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। और वो इस तरह करता है कि कल को कोई और चढ़ दौड़े और समझे कि हमने ये सारा कुछ कर दिया। मैं एक मिसाल से वाजे करने की पोजीशन में बेहतर होऊंगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जून 2025 में कहा था कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और प्लांट है उनको ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट का उर्दू में तर्जुमा है नामो निशान मिटा देना। आया नामो निशान मिटाया गया? मैंने उस वक्त भी तर्जिया में अपने ऑफर किया था और मैंने हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि ईरान ने 47 सालों से जो बंकर्स, जो अंडरग्राउंड जो टनल्स बनाई हैं, वो सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं बनाई, कि न्यूक्लियर प्लांट भी अंडरग्राउंड है। उन्होंने बॉम्ब प्रूफ ना भी बनाए हों, बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर है। और मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि ये किलोमीटरों के हिसाब से फैले हुए कंपाउंड्स अंडरग्राउंड पहाड़ी सिलसिले के अंदर हैं। मैं जितना मैं रिसर्च कर पाया हूं, दावे करना जो है वो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू फॉर इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।